मतलब कहने का ये कि एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, was there enough meat on the character, या आपको लगा कि ये एक बहुत बस प्यारी और मासूम और भोली और डरी भी होनी चाहिए और ये ऐसे रहना है मुझे बस? So I didn't have enough scenes to perform, I feel. हाँ. And by perform, I feel like अगर आप पिछला मेरा काम देखें परदेस, तो परदेस में there were a lot of lines, a lot of trauma that I had to process with while saying those lines, because परदेस was not an easy script. बिल्कुल. Mehak was, on the other hand side, a script that was very basic. Like there was more to do with the eyes and just emotions rather than speaking what I could. और मुझे लगता है वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है, because मुझे वो हाई पिच वाले सीन्स वो करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है. अच्छा लगता है? मुझे मज़ा आता है उन सीन्स में. मेरे लिए सबसे एग्जॉस्टिंग काम वो होता है जब मैंने सिर्फ स्माइल करनी होती है आपको देख के, या मैंने वो भाई जो सब कहते हैं ना, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट एज एन एक्टर, आंखों से सारी बातें करनी होती हैं, तो महक वो था, और वो बड़ा मुश्किल होता है मुझे लगता है. सीन्स को लेके कौन सा सीन चैलेंजिंग था? So the scene that you see with Nauman Ijaz, आखिरी एपिसोड वाला, में नूमी भाई के साथ मैं जब सीन करती थी ना, I used to be like, no, you're giving me a monologue with Nauman Ijaz, and what he has to do, just look into your eyes and I'm gone. That was it. तो नोमी भाई के साथ मैंने जब सीन किया ना, it's him who got that scene done from me. He's like, ऐसे करो. और सुना बड़े हेल्पफुल हैं वो. वेरी हेल्पफुल, व्हाट अ मैन. और तो वो उनके साथ वो किया, तो मुझे जब भी नोमी भाई के साथ मैं सीन्स करती थी ना, वो बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, because I used to be very scared initially, and for an actor, if you're scared and then go on a set, it shows on intimidating थे दूर से. If you don't know Nauman Ijaz, he will be very intimidating, but when you get to know him, he's the most chillest, coolest person. But Danish के साथ मेरे लिए था, because you know, I mean, अफान थे परदेस में और फिर दानिश completely different people. Completely different. And with Afan, तो it was like Afan and me went on being great friends. और तो वो इतना आसान हो गया, buddies. तो इतना आसान हो गया कि हमें लगता था, हमने रमजान में शूट किया था और हमें लगता था बस हम तो करते आ रहे हैं. And if I may, he calls you Dur-e-Fishi. Yes. So वो तो आसान, but दानिश के साथ ये था, he's very serious about his work. So he would want to do lines before and anything, and I was like, dude, I have to do this. तो मैं बैठती थी, हम करते थे, but वो भी बहुत comfortable कर देते हैं अपने co-star को. तो I think दानिश के साथ भी मेरा बहुत काम था, जो कि हमने एक ही स्पेल में करना था, तो वो आपको टाइम नहीं मिलता एक दो दिन का सोचने का या something back to back every day you're working with him. So I think the scenes with Danish and Nauman Ijaz was the most difficult ones. Yeah. तो दानिश के साथ which scenes were? हमने तो उसकी बहुत बात की, candlelight. अच्छा शुक्र है वो candlelight वाला dinner नहीं, candlelight वाली वो जो रात होती है, तूफानी रात, वो हमने तब कर लिया था जब आइस ब्रेक शेक हो गई थी. वरना मोस्टली क्या होता है हमारे ड्रामों में, पहले दिन ऐसे सीन्स रख लेते हैं. बट भट्टी भाई इज सो इंटेलिजेंट. भट्टी भाई स्टार्टेड अस ऑफ विद वो वाले सीन जिसमें मेरी झिझक शो होनी थी. तो वो बड़ी नेचुरली शो हुई, बिकॉज मैं झिझक रही थी. तो वो उनको पता था कि मुझे एक्टिंग कितनी आती है, तो उन्होंने उस हिसाब से फिर वो सीन्स प्लान किए थे. बट आई रिमेम्बर वो वाला सीन भी जब हम कर रहे थे ना, तो हम दोनों की द कैंडल वाला, हम दोनों की, हमने कहा एक भी हंसेगा ना, एंड वी वर जस्ट इन लाफिंग फिट्स, because we couldn't fathom a girl who's so like proper and everything going into a candle knowing what she's going for and just walking inside. और फिर भट्टी भाई इज अ परफेक्शनिस्ट, तो वो 20 शॉट्स लेंगे. तो हम एक शॉट से नहीं हम करेंगे, वो हर एंगल से शॉट लेंगे, वो टॉप शॉट भी लेंगे, वो साइड शॉट भी लेंगे, और फिर लाइट बंद हुई है, वाकई मोमबत्तियों में है हम, फेक बारिश हो रही है पीछे. तो वो एक अच्छा सेट पे माहौल बना होता है. बट ओ माय गॉड, वो हमने पूरे दिन में वही एक सीन किया था. वो भट्टी भाई ने ऐसे प्लान किया होता है. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन टू शूट बिकॉज लाइट्स एंड एवरीथिंग, एंगल्स. तो वो हमने एक दिन में वो किया था और हम बड़े एक्साइटेड थे. और भट्टी भाई सो पर्टिकुलर, भट्टी भाई ने कहा यही कलर पहने. मैंने कहा भट्टी भाई क्या रेड था ना, द पिंक्स, द टोन्स, शी इज लाइक दैट ग्लो, एंड ही थिंक्स सो मच. जब मैं स्क्रीन पे देखा यार, द कॉम्बिनेशन, दैट रियली मेड सेंस टू मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ drama we're living in. You have the liberty to do some stuff because it's
a Creative dream, license तो है ना, it's a exactly, fantasy that हाँ. you're seeing. वो आपको दिखानी होती है. तो वो जब मैंने देखा मैंने कहा वाह भट्टी भाई good. I liked it what I मैं saw. तो हसन को कहा, मैं कहा वो जा रही है मोमबत्ती लेके, उसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, आप you're reading too much into it. मैंने कहा अच्छा You know, यार. Hassan, when I am there, Hassan would be like, no. Hassan would not think that way. हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये महक नहीं कर सकती. मैंने कहा महक कर रही है, लेकिन ये यही कर रही है. But it was a scene that was talked Yeah. about a lot, and absolutely. And जब इतना बड़ा project होता है, and somebody as big and popular as Danish Taimur, कभी overwhelming होता है कि यार इसके कंधों पे ये चल रहा है, and he's going to be the star of the show, or is that relief? So I'll be very honest. When I signed this up and I knew Danish was playing शुरू से it, पता था? yes. When I knew Danish was playing this, तो मुझे था it will be easier for me because Pardes, on the other hand, was a lot on my shoulder. Yeah. I feel at the end it was Eamon's story. People were a part of it, but it was Eamon's story. Yeah. This I knew Danish has a fandom, and I would be very honest. I knew that it's going to bring a lot to my table because of Danish. Right. Which it did. हाँ. So और जो story थी वो execute ही ऐसी हुई थी कि वो लड़के की ज़्यादा कहानी थी और लड़की की perspective से थी. तो लड़के का बहुत पार्ट था उसमें, बहुत, बल्कि लड़के की कहानी थी. तो जब मुझे पता था दानिश की है तो मेरे लिए बस यही था कि यार आई just want to perform a bit like him, or because you know he's somebody who's coming with so much experience and all of that, and experience is what makes or breaks you. Yeah. And for him it was like a cup of cake. But जब वो सेट पे आए तो उनके लिए जो मुझे एक बात बड़ी हैरान हुई मैं देख के कि it was like it was his first day on set. He was asking everybody around कि मैं ऐसे कर लूँ, senior से अपने शहूद अंकल से, नोमी भाई से, मैं ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ. तो he's not that sort of an actor who's gonna come and say I'm gonna be like this. और मुझे भी वो ये कहते थे हम ऐसे करें सीन को, तुम ऐसे करो, ये करोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, because you know what will work and what will not. So he's that sort of an actor. So I might be a bit overwhelmed when I signed the script, but when I went on the set, the first 2-3 days, I think वो उन्होंने मुझे calm down कर लिया था. ठीक है. स्क्रिप्ट को लेके, स्टोरी को लेके बहुत कॉन्वर्सेशंस चली हैं, एंड बहुत लोगों ने भी कॉन्वर्सेशंस की हैं. And do you think it's a responsible story to tell? As a woman today living in Pakistan, आपका तो law की degree भी है, and not to say कि successful है, not to take away कि nobody is questioning your judgment कि करना चाहिए था कि नहीं. I mean, it brought you so much success, so why not? मगर would you do this kind of a story over and over again? Would you legitimize it that way? Okay, so there are two sides to it, and that's how I think about it. The first side and the side that I would want to think it in a way that this is not a story that should have been told. Right. Two, then I think I'm an artist. It's a true story. It's the producers knew the people. Is it a true story? It's a true story. ये कहीं नहीं आता लिखा हुआ कि ये नहीं आता, but it's a true story. The producer knew the guy who did all of this, and that's what was told to us. And then I feel and he like, died. And he died. And he died. So it was a true story. And then I feel like, why can't we tell two true stories? And मगर दुरे कहीं भी नहीं ये कहा गया. Story को usually आता है inspired by true events. That's what we talked about later. That ये disclaimer आना चाहिए था, आपको देना चाहिए था. But वो production की say, I can't say much about it. But this is what I was told. It's a true story. But sitting here with whatever little knowledge I have, I feel